आई वुड से कि कोई भी पेपर हो, चाहे फाउंडेशन का हो, स्किल्स का हो, प्रोफेशन का हो, यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली आप वर्क करें, हैव अ प्लान एंड गो फॉर क्वालिटी ऑफ योर वर्क रादर देन क्वांटिटी। एक हमने बहुत कॉमन चीज़ देखी होगी, स्टूडेंट्स आर लाइक कि दे आर गोइंग फॉर क्वांटम ऑफ क्वेश्चंस, एक के बाद एक पूरी किताब खत्म कर लो। बट आई वुड से कि कम क्वेश्चंस करें, बट ऐसे करें दैट दे रिटेन विद यू। तो आई थिंक थोड़ा सा मेंटालिटी में भी चेंज इससे आना चाहिए कि आप पॉजिटिव अप्रोच रखो एंड पेपर में जब आप ऐसी सिचुएशंस एनकाउंटर करो, पैनिक मत करो, क्योंकि ऐसा होता है कि यू एंड अप मेसिंग द रिमेनिंग पेपर एज वेल। टोटली एग्री। So just relax, अपने नर्व्स पर कंट्रोल रख के जितना आता है give your best and then hope for the rest. So students actually lack in soft skills a lot. So what advice would you like to give them कि how you need to buck up on your soft skills, on your communication skills? How would they be ace in that? One of the small things is that कि हम CA students हैं, AC students, everyone aims to go to the big four firms. Yeah. It's a priority, but you know job market इतनी competitive हो गई इस टाइम पर, CA ACC students आ रहे हैं, vacancies इतनी available नहीं होती, and students फिर यही सोचते हैं कि when you know they're not shortlisted, so they feel really disheartened. कोई बात नहीं, आपका big four में नहीं हुआ, आप कहीं और apply कर लो, try तो करें। Assalamualaikum ladies and gentlemen, and welcome back to another episode of Beyond Textbook. This is your host Aisha Ahmed, and as of today we have a very special guest with us. She has completed her ACCA from Tabani School of Accountancy only from day one, and currently she has been working in Midas Safety from past 11 months at the position of Senior Commercial Officer of Finance. And as of now, she is also tutoring students privately, which is actually quite commendable. She is a multitasker indeed. So without any further ado, let's catch up on our guest today. So let's give a warm welcome to Miss Hiba Amar. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hoping that you're doing well. I'm good. How are you, Aisha? I am good, alhamdulillah. So I'll ask a very basic question in the start. So how did you end up in ACCA? So was it planned? Someone recommended it to you? Was it like a family thing going on, like students are coming into finance, or it was your personal decision? Since I completed my A-levels, I was a bit skeptical for going for either BBA or BCom. Okay. And considering my elder brother was already enrolled in CA, so I wanted to go towards chartered accountancy earlier on. Oh, in a professional career. Exactly. However, I was a bit doubtful for CA, and so I explored options. I thought perhaps ACCA is something that would suit me more. And considering it's internationally recognized, so I consulted with my brother, and he was like, I should go for it. And I ended up in TSA for continuing my ACCA. That's really great. Okay, so I wanted to ask कि आपने जब ACCA join करा, so there must be some hurdles that you faced in the process. So some subjects you find a bit difficult, some a bit tacky. So how did you manage that? First and foremost, I believe मुझे सबसे ज़्यादा challenging जो लगा था that was audit. Okay. And I believe it's a paper जो हर student को कहीं ना कहीं trouble करता है. I totally agree. But one thing that was interesting was because audit हमने पहले पढ़ा भी नहीं था, तो जब skills module में first time पढ़ा तो I found it interesting as well. Although there are certain things कि आपको audit में अपनी grip theoretical answers को draft करने में काफ़ी strong रखनी पड़ती है. And once you get that, once you get the writing format पर, then things get easier for you. And other than that, I would say tax was something which was new, which was challenging. But regardless, वो ये बात होती है कि आप जब start करते हो, when you start studying with it, new चीज़ों को, just think that it's another chapter of your life. You can continue on with it once you have a proper plan ready with it. Yeah, true. तो I would say कि कोई भी paper हो, चाहे foundation का हो, skills का हो, profession का हो, you need to stay consistent. True. Consistently आप work करें, have a plan. And go for quality of your work rather than quantity. एक हमने बहुत common चीज़ देखी होगी, students are like कि they are going for quantum of questions, कि एक के बाद एक, like पूरी किताब खत्म कर लो. But I would say कि कम questions करें, but ऐसे करें that they retain with you. Yeah, true. I And totally फिर इंशाल्लाह agree. फिर आपके लिए पेपर क्लियर करना काफ़ी easy हो जाता है. I second that. I believe जैसा आपने बोला कि theory questions में majority of the students lack. So would you like to give them an advice कि how would they tackle that? I believe theoretical questions में most important आपकी reading आ जाती है. I feel कि हम ACCA या chartered accountancy की कोई भी qualification को देखते हैं, we're so focused on numbers, numerical stuff, balance sheet, income statements में इतने हम engross हो जाते हैं, we don't focus on the qualitative aspect or the theoretical aspect. तो उसके लिए मैंने जो अपनी start की थी, even just if I say about audit, शुरू में स्टूडेंट्स ड्राफ्ट आंसर्स रीड करें जो किट में होते हैं, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया होता है कि किस तरह स्ट्रक्चर करना है, बिकॉज यू हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट
हाउ यू नीड टू राइट आंसर्स, या आपके जो सब्सटैंटिव टेस्टिंग हो गई, या ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं, तो थोड़ी सी उसमें आपकी लैकिंग होती है. बट वंस यू स्टार्ट रीडिंग योर आंसर्स, फिर स्टार्ट राइटिंग ऑन योर ओन, एंड देन यू कैन कंपेयर इट. बट ऑफ कोर्स यू वोंट बी गोइंग के जिस तरह किट में आंसर लिखा है जस्ट गो फॉर दैट, कॉपी पेस्ट नहीं करना. बट वो यही है, आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो, अपने ही आंसर्स को दोबारा रीड करते रहो, तो यू रियलाइज कि अच्छा कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है, एंड फिर आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं. Acha, when you just switched from a student life to a work life, so was it Yeah. difficult for you? What challenges did you face over there? Of course, it's not easy कि आप हम अपने 22 years constantly पढ़ रहे होते हैं, फिर you have your social life as well, and फिर जब आप work life में आते हो, so your expectations are very much different from what the ground reality is. So when you start working, you realize कि there's a lot of things that you need to adapt. And यही था कि I think I started जब मेरा ACC के 3 papers रहते थे. Okay. और उस टाइम पे when I started working, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी जल्दी ऑफर आ जाएगी. I wasn't planning, मैंने बस ऐसी मस्ती में इंटरव्यू दिया था, and then alhamdulillah I got the job. Then I was like कि नहीं यार, this is something that you need to stay committed with. Yeah. And फिर when I started working and I realized कि okay, सब कुछ नया होता है, it's not easy to you know, किसी भी न्यू रोल में जाके इतना easy नहीं होता कि आप adjust कर पाओ. And फिर I remember when I started working at Midas, it was about 20 days before my SBR exam. तो वहाँ क्रंच था, क्लासेस भी लेट हो रही थी, सेल्फ स्टडी करना था. बट आई मेड श्योर वन थिंग कि आई वुड स्टडी फॉर 2 hours, बट वो 2 hours बहुत कॉन्क्रीट होंगे. Okay. तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप वही क्वालिटी टाइम, जो मैंने पहले भी कहा था, आप कम टाइम लगाओ लेकिन वो ऐसा लगाओ इट्स सफिशिएंट फॉर यू. True. एंड फिर आई थिंक यही मैंने जब स्ट्रैटेजी अडैप्ट करी, तो इट वाज एबल टू यू नो हेल्प मी आउट इन क्लियरिंग ऑल द रिमेनिंग एग्जाम्स in one attempt only. Because as you just mentioned, कि आपके last 3 papers of ACCA were left when you Yeah. joined working. So it is, I believe it was very difficult for you to manage your work life along with studying. It certainly was. Yeah. So मतलब आपने time management, I believe, was the key role in it. So how did you manage? Because most of the students, I believe, lack in time management. So how did you cope up with that? I agree on that. So जिस तरह 9 to 5 job थी, I was coming home around 6:30. And मेरे जो रिमेनिंग पेपर की क्लासेस यहाँ TSA में, they were around 7 o'clock से लेकर 10 o'clock तक होती थी. So I used to come directly from office over here, क्लास ली, क्लास से फिर घर गई. And weekends पर mostly मैं concrete time इस तरह निकालती थी कि I would अपना बैठ के मैंने notes revise कर लिए, question attempt कर लिया, CRQ attempt कर लिया. तो उस हिसाब से it went really well कि आप एक पैटर्न पे चलो. एंड अक्सर ऐसा होता था कि वीकडेज पर भी जब क्लासेस नहीं होती थी, क्योंकि 3 days a week यहाँ पर क्लास हो रही होती थी, तो आई यूज्ड टू गो होम, थोड़ा सा फ्रेशन अप होके कोई क्वेश्चन खोल लिया, वो अटेम्प्ट कर लिया, या थ्योरी पढ़ ली, इस तरह होके मैनेज हो गया था. That's really great. अच्छा, so as you're currently working as a senior commission officer of finance, so what is your key role over there? How do you manage at such a young age you've joined it? So how are you managing things at work, please? So basically Midas में it has several companies within, because multinational है. So मैं currently Midas Safety Canada and Midas Safety Germany के reporting related matters को handle कर रही होती हूँ. And of course when I went, it was not easy कि आप किसी भी new workplace पर जाते हो, but the environment and the manager, line manager का बहुत important role होता है to guide you, to calm you. And that's exactly what happened. My manager was really understanding and supportive. तो उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता delegate करना start किया, and then delegation turned into sole ownership of the work that I did. So it went really well in that regard. Then we have sales and marketing cost के analysis होते हैं. You need to see cash flow management of these entities to ensure कि इनके financial operations smoothly run हो रहे हों. And mostly इसी domain के अंदर चीजें चल रही होती हैं. Fine. So as you mentioned कि आपने interview just ऐसे ही दिया था, it was not something that was planned or you were going into induction process. So majority of the students lack कि उनका interview का जो perspective होता है कि नहीं, they just have to focus on the questions that are related to IFRS or something. So would you give some advice to them कि how can they ace in their interviews? इंटरव्यूज की सबसे पहली ट्रिक यही है कि आपने काम एंड कंपोज रहना है. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम जो गलत हो सकता है? यू वोंट गेट द जॉब, इससे ज़्यादा क्या होगा? यू नीड टू हैव कंट्रोल ऑन योर नर्व्स. आप कामली जाइए एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस, बिकॉज आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, हाउ कामली यू रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चंस, बिकॉज
इट इज़ वन फैक्ट इज सर्टेन कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 100% आंसर्स आएंगे, एंड दे वोंट बी एक्सपेक्टिंग द सेम. तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी आंसर कर रहे हो, थोड़ा आंसर कर रहे हो बट करेक्ट आंसर करो. एंड इट्स ट्रू कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, यू लाइक कि बहुत बेसिक सा होगा, किसी बेसिक स्टैंडर्ड का होगा, बट जस्ट बिकॉज यू नर्वस वो बेसिक भी चीज़ आपके जहन से स्लिप ऑफ हो जाती है. एंड आपने पैनिक नहीं करना. यू कुड से ओके, कैन आई गेट अ मोमेंट, or I need to think on that, or you could just simply say sorry, I can't recall at the moment. So they will understand you. And यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. And फिर यही होता है कि आप अगर घबरा जाओ, you'll fumble up the rest of the interview. And जब मैंने माइडिस में इंटरव्यू दिया था, टेक्निकल एरिया ऑनेस्टली बहुत कम उन्होंने टेस्ट किया था इंटरव्यू के दौरान. मोस्टली बहुत जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन थे, which I wasn't expecting. I remember one of the funny questions. So मेरे मैनेजर ने पूछा था, we were in the interview room and he was like, okay, Hiba, if I have to fill this room with balls, how many balls would I require? So I was like, it was something no one is prepared for. हम लोग इतने ज़्यादा फोकस है कि standards revise कर लो, audit concepts पढ़ लो, कि you generally actually forget कि basic सवाल भी तो वो पूछ सकते हैं because they're trying to create a conversation. So I was like, I just gave him a small smile and I was like, it depends कि ball का shape क्या है और कौन सी, is it basketball, is it a tennis ball? So it's like, yeah, basketball. So I just looked around the room. It was a small room. I said, probably 500. So he just said, is it not too much? And I was like, no, 500 is fine. So he was like, what were your basis for coming to this conclusion? I was like, I just estimated the probability. You know, अब मैंने आंसर दे दिया. I wasn't sure. You know, अब आप अगर सोचो, हमने बचपन में मैथ्स भी पढ़ा, ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे क्या, you know, आप कमरे का सरफेस एरिया देखते हो उस हिसाब से, but nothing clicks at that time आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में, कि आप कैसे आंसर करो. So and he asked me another question, if I have to paint this room, how much paint would I require? And these are something ऐसी चीजें कि very basic, you're not even thinking कि ये आएगा. So I was like, probably 1 bucket. So he was like, and why? I was like because there are 3 walls and a roof. And he's like, why not 4? I was like, क्योंकि यहाँ पे ना glass door, you won't be painting that. So ऐसे बहुत general questions आते हैं जो आपके presence of mind को देख रहे होते हैं. So you just need to relax, enjoy the experience, and if you get the job, that's good enough. And if you don't, relax, you have better things planned for you. Absolutely. So as you mentioned कि बहुत ही generic questions आते हैं, not something that is completely related to what you've studied. So students actually lack in soft skills a lot. So what advice would you like to give them कि हाँ, you need to buck up on your soft skills, on your communication skills? How would they be ace in that? See, I think, of course, one of the easiest thing is कि आप जब अपने professional module में आते हो, apply to any job opportunity that opens. One of the small things is that कि हम CA students हो या AC students, everyone aims to go to the big 4 firms. And because of that, जब छोटी firms या कहीं vacancies आती हैं, हम try भी नहीं करते कि you know कि हम वहाँ apply करें, because हमारे ambitions इतने high होते हैं, which is a good thing. But I would say कि don't let go of any opportunity जो आपके पास आ रही हो. So starting point यही हो सकता है कि बेशक छोटी firms हो, छोटी industries हो, आप वहाँ अप्लाई करें, आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको जॉब के बारे में पता चलेगा. When you interact with the professionals, आपकी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, such as your self confidence, communication skills improve होंगी. And I think यही जब आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो ultimately different interviews के हिसाब से आप अपने आप को improve कर सकते हैं. And of course वो आपके प्रोफेशनल करियर में भी काफ़ी हेल्प करेगा. True. I totally agree. And as you mentioned कि आपने सब सारे ACCA के पेपर्स 1 go में क्लियर किए हैं, which I believe is an achievement by itself. So इतना हेक्टिक हो जाता है sometimes कि students are like कि नहीं बस it's enough, we are back and forth papers again and again. So how can they keep themselves consistent throughout the journey till the end? क्योंकि एक point of time पे आके आता है कि यार इतना हसल हो गया कि we're done with it. So how do you do that? I feel कि इसके लिए it really matters कि आपने committed रहना है, आपका mindset goal oriented होना चाहिए. What is that you ultimately want? It's ACCA affiliation, then it's ACCA membership. Perhaps कुछ students के लिए OBU भी होता है. तो आप अपने पास goal oriented होके चलोगे ना तो things attain करना बहुत आसान होगी. And of course affiliation से पहले भी छोटे steps हैं कि पहले आपने foundation complete करना है, फिर skills करना है, and then of course professional आके करना है. तो आप जब अपने छोटे छोटे steps को लेके चलोगे, छोटे छोटे goals set करोगे,
तो वो काफ़ी ईज़ कर देंगे आपको बड़े टारगेट्स अटेन करने में, Yeah. बिकॉज़ इट्स अल्टीमेटली योर स्मॉल गोल्स जो आप अटेन कर रहे होते हो दैट इनेबल यू टू अचीव बिगर पोजीशंस. Yeah, true. I totally agree. Acha, as you mentioned, you're tutoring, and apart from that, you're working. And so, how are you managing things? आप personally अपनी hobbies के लिए time कैसे निकालते हो? मतलब there must be something you like doing on weekends. So, would you like to share that? Yeah, of course. अच्छा, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है. There was a time when I was actually a fan of cricket. Unfortunately, currently Pakistan cricket team is not playing that good. तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा interest हट गया. Setback हो गया. Yeah, थोड़ी सी disheartened हो गई, but I'm pretty sure that's temporary only. Yeah. Other than that, weekends पे मैं अपने भाई के साथ बैडमिंटन खेलने जाती हूँ. Because badminton is a go-to sport from O levels only. O levels में थी मैं, A levels में थी, even ACCA में. It was something that was, you know, you need to refreshen yourself Something, up, yeah. because हमारी routine इतनी boring हो जाती है that you're studying and फिर paper दे रहे हो, books में फंसे हुए होते हो all the time. कुछ ऐसा lively You नहीं need है. something Yeah. to let out all that, Yeah. you know, that stress. So I found badminton as a sport that was always there, जो मुझे बहुत खुश रखता था, and मैं और मेरा भाई weekends पे जाके badminton खेल लेते हैं. Okay, so before wrapping up, I would like to ask कि students जो अभी currently ACC अपना exams दे रहे हैं या pursue कर रहे हैं, उनके लिए एक generic advice that you would like to give to them that would help them in their entire journey. I feel at this point students को सिर्फ focus करना चाहिए कि अभी ACCA बस अपना complete करना है. They shouldn't be worried about the fact कि job कहाँ मिलेगी, हमने यहाँ से आगे क्या करना है. Take small steps. अब आप अपने papers पर focus करें. I don't know, जो बच्चे फेल हो जाते हैं, they get really disheartened, and it's understandable because आप इतना effort लगाते हो, and when you don't get the result, disappointment is quite normal. True. But that's the thing, keep on giving your best and stay motivated. Once you get your qualification, your certification in your hand, फिर आप अपने आप को relax and you know you could feel a sense of achievement. Yeah. And students को यही देखना है कि of course आप ACC के towards end जब आ रहे होते हो, तो आपके साथ के colleagues will be finding jobs, some will be going to Big Four, some will be going to industries. तो आपने कहीं पर भी ऐसा feel नहीं करना कि I haven't achieved anything. Yeah. हर किसी का feel एक different level का pace होता है. आप सबकी competencies different होती हैं, but just because someone is getting something or achieving something far sooner than you, stage, yeah. that doesn't mean कि you're lacking in something. आपका time predefined एक different pace पर है. तो बस आपने यही देखना है कि जो towards your final stage of ACCA अप्लाई, छोटी फॉर्म हो बड़ी फॉर्म हो, वहाँ अप्लाई करें, इंटरव्यूज दें, अपॉर्चुनिटी मिले, सीज इट. जस्ट डोंट थिंक कि नहीं बिग फोर से नीचे नहीं जाना. बिग फोर ऑफ कोर्स इज वहाँ का एक्सपीरियंस प्रायोरिटी, इट्स अ प्रायोरिटी, बट यू नो जॉब मार्केट इतनी कंपेटिटिव हो गई है इस टाइम पर. CA ACC स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वैकेंसीज इतनी अवेलेबल नहीं होती, एंड स्टूडेंट्स फिर यही सोचते हैं कि व्हेन यू नो दे आर नॉट शॉर्टलिस्टेड, तो दे फील रियली डिसहार्टेंड. कोई बात नहीं, आपका बिग फोर में नहीं हुआ, आप कहीं और अप्लाई कर लो, ट्राई तो करें, वहाँ हो जाए, आप वहाँ 1-2 साल काम करो, फिर ऑफ कोर्स साथ साथ आप अप्लाई भी कर लो दूसरी जगहों पे, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे जब यू गेट अ हायरिंग तो यू कैन ऑलवेज स्विच. तो ये चीजें थोड़ी होंगी जिसको लेके स्टूडेंट्स नीड टू फील रिलैक्स्ड कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ यू आर नॉट लैंडिंग एट अ बिग प्लेस. स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, मेक अ बिग डिफरेंस एट अ स्मॉल प्लेस rather than going to a big place and making no difference at all. अपने आप को improve small steps I believe. Exactly. आप अपने small जगह से start करके अपनी skills improve करें. Let your CV talk about your potential. True. And जब आप of course experience gauge करेंगे फिर तो you will of course go to big places. अच्छा, when I talk about exam, तो exam का जो paper pressure होता है, जो nervousness होती है, majority of the students face that. Even if I include myself, I truly get zoned out when I see the paper for the very first time. So how can students tackle that? Honestly, genuinely हर student के लिए सबसे ज़्यादा hectic ये होता है कि practice हो जाती है properly, but paper वाले day पे हम क्या करें? Paper वाले day, God forbid, कोई ऐसा आपने question देख लिया that you know you're not well prepared for, या फिर revision plan का part नहीं था, तो you really panic for it कि अब मैं क्या करूँ? I remember AAA में मेरे साथ ऐसा हुआ था that उस time पे sustainability का topic इतना ज़्यादा emphasize में नहीं था. एंड प्रैक्टिस एंड रिविजन करने में भी मैंने बस देखा कि सस्टेनेबिलिटी क्या ही पूछेगा वो, एंड एग्जामिनर एंडेड अप आस्किंग अ 25 मार्कर क्वेश्चन ऑन सस्टेनेबिलिटी. कंसीडरिंग ट्रिपल का पेपर एक ऑलरेडी एक उसमें ऐसा एलिमेंट है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, व्हिच इज अ जेन्युइन स्ट्रगल, जिसकी वजह से उसका पासिंग रेशियो भी यू नो सिग्निफिकेंटली लो. इट्स प्रोबेबली आई थिंक 35 to 40%. एंड जब मैंने अपना लास्ट क्वेश्चन खोला एंड इट वाज ऑन सस्टेनेबिलिटी, I remember I had about 20-25 minutes in hand, but मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि इसमें मैं लिखूंगी क्या, because sustainability की theory पढ़ना was one thing and sustainability report पूरी उसमें जो आ गई थी that was totally different.
अब I was like गया paper तो मैं क्या करूँ? And उस time पे there was nothing I could do other than attempting Of course, के yeah. जो question उसको Do attempt or तो मैं die करूँ. situation. And I was like मैं बैठी हुई थी and मैंने इंविजिलेटर को बोला कि can I get a glass of water? And she went and she got me a glass of water. And मैंने पानी पिया and I was like okay करना है. I just looked around. सब बच्चे you know they're totally into their paper, totally zone में हैं. आखिरी के 20 minutes and ठक ठक. And वो stress भी बहुत होता है when you know you can't do something. And others are like acing And in you're it. just hearing the sound of the keyboard सबके जो हो रहे होते हैं Yeah. ठक 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 ठक. That was so stressful. But फिर I was like okay I'll start typing. मैंने उसमें एक 5 marker था. उसमें question को देख के उसको rephrase करके लिख रही थी. फिर उसमें एक 6 mark का part था. I did that but उसके बाद मेरा timer lock हो गया of course. And I ended up missing 15 marks worth of paper. But I knew that it was something which was beyond my control. Yeah. So that is one thing कि आप जब paper में जाओ and you end up facing a question जिसको आपको लगता है यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा या I can't recall. तो आपको पता है आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो. जो आ रहा है लिख दो. Just write it down and then hope for the best and pray कि you know you'll end up passing it. And यही हुआ. I passed at 51. But you passed. I passed. So considering the fact कि 15 mark का छूट गया, it was really disheartening जब मुझे result आया. I was like 51, but then I realized this 51 could have been a 49. Yeah, of तो मैं course. क्या कर लेती. उस 49 पे I would have cried कि 2 marks और मिल जाते तो क्या होता है. अभी I'm like सिर्फ 2 marks से मैं पास हुई हूँ. तो I think थोड़ा सा mentality में भी change इससे आना चाहिए कि आप positive approach रखो and paper में जब आप ऐसी situations encounter करो, panic मत करो क्योंकि ऐसा होता है कि you will end up messing the remaining paper as well. Totally agree with तो that. just relax, अपने nerves पर control रख के जितना आता है, give your best and then hope for the rest. That's actually what I agree with. I second that. Okay, so we have a rapid fire round along with it. So in rapid fire, what you actually have to do, I'll ask you some questions and without thinking, what the first thing that comes to your mind, you have to answer. All right. Okay, so we'll start off with some very, very basic questions, not very tacky. Okay. What's harder, passing F9 or finding work-life balance? Work-life balance. Ever cried over a failed mark? Every single time. Okay, so do you revise more or do you scroll more? To be honest, I do scroll more. That's something you should regret. Okay. Deadline panic or a chill procrastinator? Chill procrastinator. That's really nice. Yeah. Okay. So what do you prefer, group study or a solo struggle? You can never study in groups, honestly. Group studies turn into gossip sessions, to be very honest. So solo studies for sure. Is sleep an optional subject in ACCA? Is that even an option? Honestly, where do you find the time to sleep? Yeah, of course. Office job plus ACCA, thriving or surviving? Surviving for sure. I totally agree with it. So, do you schedule your social life or wing with it? I have to schedule it for sure. Yeah, because I believe you have such an hectic life that you have to we need to schedule be, it. you have to stay organized. Okay. Most productive study hour, midnight or dawn? Midnight. Midnight. A night owl, I believe. Yeah. Okay. Are weekends for rest, revision, or regret? Probably regret because, I'll be thinking that next day I have to go to work. Mondays. Yeah. So what's that one thing that keeps you sane throughout your journey? Payday for sure. For sure, I believe. Thank you so much, Shiva, for joining us. It was lovely meeting with you. And thank you so much, viewers, for joining us today. So don't forget to like, share, and subscribe and comment down below who would you like to see next in the episode. Thank you so much. Ooh.